Okay. This meeting is being recorded. Hare Krishna. So as we said, today's topic is biodata of Lord Krishna. And we will see the contradictions. What he is, what he has told about himself. Some people say Krishna is very arrogant. वो बहुत ज़्यादा arrogant है. वो बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मैं यूँ. But if you look at it, अगर यहाँ पे कोई शेख मोहम्मद से मिलने जाए, उसको पूछे भाई साहब आप कौन है, who are you? What will he say? भाई I am ruler of Dubai. Now he say he is very arrogant. That's a little not right, correct? So he is telling the fact only. But भक्त लोग जो हैं उनको पता पड़ जाता है कि राइट है, बट अभक्त है तो डाउट बना रहता है. फिर काफी जब पिटाई होती है लाइफ में, मतलब आफ्टर लॉट ऑफ बीटिंग्स, देन बहुना जन्मना मानते ज्ञानवानम प्रबद्धते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा. आफ्टर लॉट ऑफ बर्थ्स देन फाइनली वन रियलाइजेस, ओहो अरे पहले ही मान लेते तो यू वुड हैव सेव्ड सम टाइम, राइट? So Radha Raman ki jai. See, so beautiful, huh? He's my favorite deity actually. Okay. So Krishna himself is telling about himself. So this thought came to me when we were doing the Chaitanya Charitamrita. उसमें चतुर श्लोकी भागवतम came. So there are 4 shlokas in Srimad Bhagavatam on which the entire Srimad Bhagavatam is based. It is not something hearsay or something. It has a basis. There are 4 verses, seed verses like that, what we call it, Chatur Shloki Bhagavatam. 4 श्लोकों में भागवतम है. तो भागवतम कैसे आ रही है? It is descending how? See, there is one Aroha Pantha and one Avaroha Pantha. Aroha Pantha is what? You keep on finding deductive knowledge. You can see from there? Good eyesight. Yeah. So, what was I saying? Aroha Pantha and Avaroha Pantha. What is Aroha Pantha? In music also Aroha Avaroha होता है ना. Aroha में ऊपर जाते हैं, खुद पता कर रहे हैं भगवान है क्या, प्रूफ चाहिए करते करते आरोह, तब तक कई सारे लाइफ टाइम निकल जाते हैं. Several lifetimes are gone, and in between we take lot of detours and this that. Destination is sometimes lost or it takes a lot of time. Second is Avaroha Pantha. Avaroha Pantha क्या है? ऊपर से नीचे आना. जो information आ रही है as it is ले लेना. See, knowing the information by deductive knowledge and accepting the authority, there is no difference. आप खुद पता करो या अथॉरिटी से लेके मान लो, इनमें कोई फर्क नहीं है. How? There is a proof. What is it? If the mother tells the child, माँ ने बच्चे को बोला ये तुम्हारे पिताजी हैं बेटा, आपकी बिटिया ने कभी पूछा मम्मी आप डीएनए टेस्ट करा के बताओ तब मानूंगी? They never told like that. So it is a given by authority. Similarly, this information is given by authority. Some things we are able to understand, some things we are not. That is our problem, but the authority has given what it is. So these 4 verses, seed verses, 4 seed verses, Krishna himself gave it to Brahma. Chatur Shloki Bhagavatam. Chatur Shloki say Chatur Shloki. क्या वाह, क्या बोल रहा है यार ये? ब्रह्मा जी से पहले उसको बता गए भगवान. So not. Okay. So these 4 shlokas which are there, Krishna tells. So when Brahma ji suddenly he appeared from the navel, as we know, he said, "Bhai, kahan pe aa gaye?" It was all dark there, right? And then suddenly there was voice. आवाज आई, tapa, tapa, tapa. भाई तप करो. So he did tap. Then Vishnu ji appeared. He shook hands. भागवतम में उन्होंने शेक हैंड किया. वो शेक हैंड भी वहां से आ रहा है.
is not invented by Western countries. It is coming straight from Bhagavatam only. He is the first person to shook hands with Brahmaji. Bhagavatam is telling, I am not telling. So he shook hands. After that, Brahmaji said, "Bhai, मुझे क्या करना है? I want to do the creation, but what should I do?" He said, "First, I will give you the 4 seed verses which you should know. उस पे meditate करके you will get all the knowledge on its own." So he told 4 verses to Brahmaji. Brahmaji then told this to Naradji, his son. Naradji then told this to his disciple Vyas Devji. When Vyas Devji was very depressed, Vyas Devji ने सारे ग्रंथ लिख दिए, but he was in depression until he wrote this. Vyas Devji then told this to his son Shukdev. When Shukdev ji was there, वो तो निकल के पैदा होके भाग लिए थे, बोले संसार में नहीं फंसना है. Then Vyas Devji recited shloka from Bhagavatam. He said, अगर ये चीज available, if this thing is there in the universe, it's worth living here. He came back. So then Vyas Devji told to Shukdev ji. Shukdev Goswami then told this to Parikshit Maharaj. At that time, who was sitting there? Suta Goswami ji was sitting there. After roughly 1 or 2,000 years, he was traveling around the globe and he reached Vedic University. कौन सा यूनिवर्सिटी था? नैमिषारण्य में. वो फलक्रम बताते हैं उसको, भागवतम में है, इट इज स्पिरिचुअल फलक्रम ऑफ दिस अर्थ. तब वहां पे thousands of rishis they asked, सूत जी आप वहां प्रेजेंट थे भैया, आप प्लीज बताइए कि क्या डिस्कशन हुआ था. अभी मेरे को सुबह का पढ़ेगा, शाम को याद नहीं रहता है. आफ्टर 1500 years he repeated 18,000 shlokas with purport, word by word also. This was, so they were shruti dhars. एक बार सुन लिया, कंठस्थ हो गया. Then from there onwards परंपरा से भागवतम चली आ रही है. तो जो हम ये पढ़ रहे हैं, ये कोई मामूली चीज नहीं है. इसको हाथ लगाने का मतलब ही है कि ओनली फॉर्चुनेट सोल्स जो है वो उसको टच कर सकते हैं, नहीं तो एक्सेस, हर चीज आजकल एक्सेस का है. करेक्ट प्रभु? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एक्सेस. यू कैन गो टू चेयरपर्सन's ऑफिस इफ यू हैव द एक्सेस. इफ यू डोंट हैव एक्सेस, यू कैन नॉट गो टू अ सर्टेन फ्लोर आल्सो इन द लिफ्ट. हमारा कंपनी में भी ऐसे ही है. ठीक है प्रभु? ये वाला अगर 8वें पे 10वें नहीं जा सकते, आपको एक्सेस बंद है. एक्सेस है तो आपको ये मिलेगा, एक्सेस नहीं है तो नहीं मिलेगा. क्योंकि क्या है, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्. इस फील्ड में क्या है, थोड़ा सा भी अगर कुछ कर लिया तो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होता है. फाइनेंस में से है कोई आप में से? अच्छा, शुक्र है मैं ही अकेला हूँ. ओहो, फाइनेंस में आई रिमेम्बर्ड वंस व्हाट हैपेंड. एक जना जा रहा था एरोप्लेन में, तो सडनली वो एरोप्लेन क्रैश हो गया. तो एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसको पैराशूट से दिस पर्सन केम डाउन इन द मिडिल ऑफ द फील्ड. तो उधर एक सूटेड बूटेड आदमी जा रहा था. उसको पूछा, भाई साहब प्लीज कम, कैन यू टेल मी वेयर एम आई? माय कंपास नॉट, आई हैव नो आइडिया वेयर एम आई. ही सेड, सर you are exactly in the middle of this field, in the center. He said, bhai, you are a chartered accountant. He said, sir, how you know? He said, you are telling me precise information but it has no value. इसका फायदा क्या है? So like this, these 4 shlokas के ऊपर सारा का सारा based है श्रीमद् भागवतम. अब हम कह सकते हैं ये 4 श्लोक थे भाई, 18,000 कहां से आ गए? ये मनगढ़ंत है क्या? नहीं. When Krishna told this to Brahma and Brahma told this to Narad ji, he added one word in Srimad Bhagavatam, Vipuli Karu. Please expand this, because Hari Anant, Hari Katha Ananta, this is unlimited. This 4 shlokas very difficult to, like in Bhagavad Gita also 4 shlokas seed verses, but okay, those who are realized they can understand, but for us, for me, you need detail. So on that basis, it has been expanded to include all the pastimes of Krishna, his devotees and paraphernalia. भागवतम में क्लियरली है कि भगवान और उनके भक्त को अलग नहीं किया जा सकता है. वो सब एक साथ नित्य सिद्ध हैं. वो खासतौर से एक टीम बनी हुई है, वही बार बार आते हैं, आप देख सकते हैं. राम जी, लक्ष्मण जी आए, उसके बाद में कृष्ण जी, बलराम जी है. वो उनके साथ की जो टीम है वो भी सेम ही है एक्चुअली में, वही आते रहते हैं. वो जैसे हमको घूमने फिरने का शौक है, उनको भी थोड़ा चलो वो
वो अपना घूमते रहते हैं इधर से, चलो इस बार इस लोक में जाके ट्रैवल पिकनिक बना के आते हैं, उधर बहुत परेशानी चल रही है, वो जाके थोड़ा है ट्रांजिशन कर। तो ऐसा है। तो भगवान इन 4 श्लोकों में क्या बता रहे हैं, भगवान क्या है इसमें, मतलब ये इसमें खास बात ये है, इसमें जगह जगह पे वर्ड है अहम। द वर्ड यूज्ड इज मेनी प्लेसेस अहम। अहम मीन्स मैं। सो ही इज क्लियरली टेलिंग भाई मैं ये ऐसा हूं। अब मानना नहीं मानना, डीएनए टेस्ट कराना है तो we can spend billions of years, but in one lifetime if you want to do, then accept it and go ahead. Simple. So please repeat after me. Ahamev aham evasam evagre nanyad yat sad asat param paschat aham yad etacha yo avishyeta सह अस्मिहम। थैंक यू। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, अहम एव आस्म एवाग्रे। एव अग्रे, अग्रे मीन्स बिफोर क्रिएशन, जब ये उत्पत्ति हुई थी मैं उसके पहले था, डाउट नहीं है इसमें। बिफोर द क्रिएशन आई वॉज देयर, ही इज टेलिंग अबाउट हिमसेल्फ, आई वॉज देयर बिफोर द क्रिएशन। ओके, देन ही इज सेइंग न अन्यत यत सत असत परम पश्चातहम यत एताच यो वशिष्येत सो अस्मिहम। मैं पहले भी था, उसके बाद में यत असत जो परम पश्चात एंड में भी मैं ही रहूंगा। पहले भी क्रिएशन के मैं था, क्रिएशन के बाद भी मैं रहूंगा। एंड यत एतात च यह, ये जो अभी देख रहे हो क्रिएशन, ये भी सब कुछ जो है वो मेरे से ही बना है। मतलब पहले भी मैं था, इस संसार में भी मैं ही हूं और बाद में भी मैं ही बचूंगा। तो इसको कैसे याद रखना है, चतुर्श्लोकी भागवतम का एक एक्रोनिम है इसको याद करने के लिए। उस एक्रोनिम को कहते हैं VVIP। VVIP, if you remember, you can remember चतुर्श्लोकी भागवतम meaning at least. So इसमें क्या है, what is V? He is saying Brahma, it is I, the personality of Godhead who was existing before the creation. पहले भी मैं ही था, when there was nothing but myself, nor was there material nature the cause of this creation. That which you see now is also I. जो अभी दिख रहा है वो भी मैं ही हूँ, the personality of Godhead. And after annihilation, what remains will also be I. जो after annihilation जो बचेगा वो भी मैं ही हूँ। तो V से क्या है, वासुदेवम सर्वमिति। Everything is from Krishna only. Vasudevam Sarvamiti. He was before, now and later. So if we remember this, that he is the one before, he is there in everything. Hari Vyapaka Sarvatra Samana Prem te pragat hum मैं जाना. I am there everywhere, but how will I be manifested? Premanjuna Charita Bhakti Vilochaneena. अगर भगवत प्रेम है आंखों में तो वो दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि कई लोग पूछते थे प्रभुपाद को, प्रभुपाद भगवान दिखा सकते हो? बोले हाँ देखो, दर्शन करो मूर्ति के। बोले ये नहीं, बोले तुम्हारे पास जैसी आंखें वैसे ही दिखाई देगा ना। The kind of eyes I have, that only I can see. You want to see the spiritual form, then spiritualize your eyes. Simple. So V meaning वासुदेव सर्वमिति, पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूं, बाद में भी मैं ही रहूंगा। हरे कृष्णा। ओके, अगला V क्या है, वैल्यू। What is the V word for value? 2934. Please repeat. रते रथम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। क्या कह रहे हैं भगवान, अपने बारे में बता रहे हैं, बायोडाटा दे रहे हैं वो अपना खुद का, CVM का। ये पहला वाला वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ मैं ही हूं भाई साहब। सेकंड, रते अर्थम, विदाउट अर्थ, यत प्रतीयेता न प्रतीयेता च आत्मनि। इफ एनीथिंग इज नॉट कनेक्टेड टू मी, इट हैज नो अर्थ।
it is valueless. Anything has, चीज की वैल्यू तभी है जब उसका कनेक्शन भगवान से है. जैसे शरीर का वैल्यू तभी तक है जब तक आत्मा से कनेक्शन है. आत्मा से कनेक्शन गया तो शरीर बेकार है. ऐसे ही भगवान बता रहे, ये लॉजिकल है. तो इसी तरह भगवान बता रहे हैं कि जो भी चीज का वैल्यू अगर है तो वो तभी है जब मेरे से कनेक्टेड है. मेरे से कनेक्शन जैसे जैसे प्रभुपाद यूज्ड टू गिव दिस एग्जांपल. हाथ में वी हैव 5 fingers. नाउ दिस फिंगर हैज गॉट फ्रैक्चर्ड. I will spend fortune to have one small finger treatment done so that I can use this finger. But if this finger is cut and goes in the drain and there is no hope of connection, then will I spend any money? That finger has no value. This finger has only value if it is connected to my body. If it is gone, then it has no value. Similarly, he's saying anything has any value provided it is connected to me. Otherwise, it is only illusion. जैसे जाते हैं ना हम लोग, वो हट्टा जाते हैं तो रास्ते में सब वो मिराज दिखाई देती है. सीधा मिराज लोग, ओ पानी आ गया, उधर पहुंचे तो कुछ भी नहीं है. No value. So he's saying, oh Brahma, he's giving his biodata. Oh Brahma, whatever appears to be of any value, if it is without relation to me, it has no reality. क्यों भाई, रियल तो है, सब कुछ है. आई एम नॉट कनेक्टिंग, क्या प्रॉब्लम, व्हाट्स द इशू? एनी गेसेस? आई विल नॉट कनेक्ट इट, स्टिल आई एम एंजॉयिंग, एवरीथिंग इज गुड. व्हाई इट हैज नो वैल्यू? सी, एवरीथिंग इज कैन बी चैलेंज्ड एंड एवरीथिंग हैज एन आंसर. Because body is finishing. Body is finishing, yes, good point. But why it has no value? So what? There are so many atheists are there, who cares? There are so many dogs, they come and go, who cares? Problem is why it has no value is because we will be trapped and come back again here. Value of life is only when we can utilize this body for the purpose it is given. Otherwise, no value. Nobody can say that I will live here forever. Doctors can also not say. Correct? Nobody can say. So he's saying, know it as my illusory energy, that reflection which appears to be in darkness. तो दो उन्होंने चीज अपना बायोडाटा बता दिया. पहला पॉइंट, everything is me only, वासुदेवम सर्वमिति, we. ए ले वाह. ए तमिल करी वाह. कನ್ನಡ अल्प ಸ್ವಲ್ಪ adjust ಮಾಡಿ. Okay, so this is the basis of Bhagavatam. First introduction is biodata is what we, everything is me only. Don't be under confusion कि तुम्हारा भी कुछ, तुम्हारा क्या value है? You are connected to me. That's the value. Otherwise, no value. Second is, so first one is we, Vasudevam Sarvamiti. Second is value, we. So दो introduction उनका हो गया. तीसरा अब है I, VVIP. I क्या है? Inside out. क्या बता रहे हैं? प्लीज रिपीट. यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्च अवाच्यषु अनु प्रविश्यतानि अप्रविश्यतानि धातेषु न तेषु हम. So he is saying, Yatha Mahanti Bhutani, like in the Mahanti, like in the universe, all the elements, Bhuteshu Ucha Aveshu Cha Anu, they are inside also and they are outside also. Let me read the translation, then we'll elaborate. Pravishyanti Apravishyanti, they have entered also, all the elements of Kshitijala Pava Gagana Samira, Pancha Bhutaya Adhama Sarira. All the 5 elements, Bhumi, Rapo, Anal, Vayu, Kammana, Buddhi, Revacha, all 5 elements are inside the body. Agreed? Earth is there, water is there, fire is there, ether is there, Bhumi, Rapo, Anal, Vayu is also there. Then come Man, Buddhi, Revacha. Man, Buddhi, Ahankar bhi hai, 8 things are there. These are all inside the body, but they are outside also, right? Fire is there, no outside. Air is there outside. Similarly, so he is giving very logical answer. वो ऐसे नहीं है मान लो बस. He is saying just like
All elements are inside and outside. Similarly, I am in everything and I am outside also. So therefore, this is a combination of Nirakar and Sakar. He is there in everything. Harivyapaka Sarvatra Samana. He is there in every atom. And he is there in his abode also called Golok Vrindavan. Fire चाहिए तो पत्थर रगड़ो, fire निकलेगी. Similarly, once is connected with Bhagavatam, then he will give the mercy to understand him. So I is inside out. He is inside also, he is outside also. This is his biodata. He is himself telling. So VVIP. ठीक है जी. पहला V is what? सब कुछ मैं ही हूँ. ये पहला श्लोक का भागवतम का बेसिस ये है. ये 4 श्लोक के बगैर भागवतम नहीं है. There cannot be Bhagavatam without these 4 shlokas because he is the first one. He is the first, what do you call it, to sit on Vyasasana and give Bhagavatam class to Brahma. Correct, no? Yeah. So first one, Vasudeva Sarvamiti. Second, we value. When there is value, when it is, everybody is connected to Krishna. For example, this TV has only value if it is connected to electricity. If I remove this, TV can be of lakhs and millions of dollars, but it will not work. VV. Third is I, inside out. He is inside everything and he is outside also. So hence, Achinta Veda Ved. Somebody says he is only Nirakar. Huh? Yes, correct. No, he is only Sakar. Yes, correct. He is both. Yes, correct. So different religions also which have come out, they are also a subset of the Sanatana Dharma. If they are saying God is only Nirakar, he doesn't manifest. Yes, true. No, he is only Sakar. Yes, true. He is both. Yes, correct. See, once what happened? Once there was a forest. जंगल था जंगल. वहां पे एक पेड़ था. पेड़ पे एक गिरगिट रहता था. What do you call it? Chameleon. Correct. He used to live there. And there was one sage who was living there. एक संत भी वहीं रहते थे. So one day one person went from the village. He was roaming around in jungle, firewood वगैरह इकट्ठा करने के लिए. He saw जो chameleon था वो green color का था. वो वापिस आया. And he told all the villagers, I saw a beautiful big chameleon, green color. Next day another person went. उस दिन वो उसको लाल दिखाई दिया वो. It was red that day. So he came back. No, you are telling wrong. DNA test all philosophy. ये तो red है. You are telling green wrong. He said, नहीं भाई green है. I have seen in my. I have also seen my own eyes. Next day somebody else went another color, another one. So all the villagers started fighting. So they all gathered. Let's go together. At least that much intelligence was there. So they all reached. When they reached there, chameleon तो नहीं था वहाँ पे उस वक्त, but the saint was there. So they said, let's take some witness. पूछ लेते हैं कि भाई क्या कलर है बता दो सर आप. So they all asked, sir आप कलर बताइए. There is a chameleon. You stay here. You must be knowing this. He said, yes, I can tell you. He said, बताइए. He said, sometimes he is green, sometimes he is red, sometimes he is blue, sometimes he is black, sometimes he does not have any color. तो भगवान का भी ऐसा ही है. Different colors he has, but he has no color also. So no need to fight on it. So VVIP, first V. Please remind me of the time, otherwise only one part we will be able to. People are misusing the spiritual aspect to control. Simple. It is simply that. That is why when a guru is made, first thing one should look at is that person should not want anything for himself or herself. Then you can make that person. Plus, of course, the philosophy part second. But pehle ye hai, what that person want from me. If it doesn't want anything, only seva, then like we have the acharyas, we have so many acharyas, we have Prabhupada, we have Tulsidas, we have Krishnadas. There are. He has got power. He may say God and all that. I don't know, so I cannot comment on it. But of course, some extra power by Krishna has been given. Otherwise, why so many people are following? Even devils. Ravan also. He is not ordinary. Why so many people are following him?
Something is there, right? Actually speaking, the power in the Daityas is also coming from Krishna only. See his beauty. They are fighting with him, but Prahlad Maharaj was asked, na? Prahlad Maharaj को पूछा Hiranyakashyap ने, where are you getting this ball from? He said, boss, where I am getting, you are also getting same person. अभी क्या confusion है? So anyway, so inside out he is there. Next one, okay. Last one. So 4 shlokas he told. उसमें काम हो गया. पूरी भागवतम ब्रह्मा जी को समझ में आ गई. 2936. Last one is P. VVIP. एतावद एव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वया गतिरेषाम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा. भगवान ने लास्ट में बता दिया भैया, 3 तो मैंने बायोडाटा बता दिया, पर क्यों बताया वो भी सुन लो. Why I have told you these 3, please understand. ब्रह्मा जी को बता रहे हो. क्या कह रहे हैं? A person who is searching after the supreme absolute truth, the personality of Godhead, must certainly search for it up to this. In all circumstances, in all space and time, सर्वत्र सर्वदा, and both directly and indirectly. बोले हम 3 चीज बता दी, सब कुछ मैं ही हूं, पहले भी मैं था, अब भी मैं हूं, बाद में भी मैं ही हूं. वी, कोई चीज की वैल्यू ये मेरे से कनेक्टेड है, अंदर भी मैं ही हूं, बाहर भी मैं ही हूं, और सबका गोल क्या है? मुझको पाना, ये गोल है. वो होता है ना, छुपन छुपाई बच्चे खेलते हैं, हाइड एंड सीक. सोनू जी, यू प्ले हाइड एंड सीक? हाँ, Krishna is also playing hide and seek with us. That's all. And where is he hiding? He is hiding behind a curtain. That curtain is made of Maya. पर्दा हटाओ, दर्शन करो. अब वो हट नहीं रहा पर्दा, प्रॉब्लम यही है. तो क्या करना है? पर्दे को कन्वर्ट करो. If you do sense gratification, तब वो महामाया रूपी पर्दा है. वही काम भगवान के लिए करो तो महामाया रूपी पर्दा कन्वर्ट होके अंतरंगा शक्ति बन जाएगी, राधा रानी वाली. वही पर्दा वही रहेगा, बट वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा. देन यू कैन सी. तो ये हो गया, ये भगवान ने दिया. मुझे लगता नहीं आज सेकंड एस्पेक्ट हो पाएगा, बट anyway, we will respect the time, because at the end of it, if I don't respect time, time won't respect me. Then what will happen? Okay, so we'll continue with this. Maybe we'll take the contradiction in the next one. Okay, we'll continue with this. I don't want to hurry into this, because if you look at it, it's just very simple information, but it has so much of deep meaning, because the entire Bhagavatam, the entire devotional service is based on these 3 set of information of Bhagavatam. Whatever it is, it will fit into this only. Okay, so this is the goal of life, he said. Achha, one thing very interesting, he is saying you must search for it up to this. यहां तक सर्च करो मेरे बारे में, क्या उसके बाद बंद कर देना है? उसके बाद क्या करना है? What should we should follow it? We should continue search. After that, devotional service continues. Meaning search, keep on searching. You realize, but don't leave it after that also, because that is what the rasa is. Continue the devotional service. That is what it means here. Okay. Let us see now. See. Personality of Godhead. Sorry. Yeah. Search up to this. If you are searching for the absolute truth, the personality of Godhead, must certainly search for it up to this, in all circumstances and all space and time. Matlab, after finding, you cannot say finish. Sarvatra sarvada, eternally you should keep on doing it. Otherwise, why did he add sarvatra sarvada? Sarvatra means everywhere, sarvada means all the time. It can never happen. But that's what, see, devotees are very smart. They'll say, Krishna, I don't want anything. Just give me your devotional service wherever I am. You can send me to hell. Arey bhai, if in hell you will do devotional service, it will remain hell.
it will become Golok only, na. So this is a nice way of saying, boss, give me always masti only. That is what it is. Okay. So these are the 4 verses. Now here it is the beginning of something, right? Udhar to he is about to do the creation. So 4 this thing. What is in the beginning and in the end is also in the middle में वही है, बराबर है. So now let us see when he was winding up his pastimes. That time what he told Uddhav. Busy heavy. Okay. So at the end, when he was leaving Golok for Goloka, then that time only 2 personalities, खाली 2 लोग उनसे मिले थे. कौन कौन है? मैत्रेय मुनि एक है, दूसरा उद्धव जी. उद्धव जी तो मतलब सराबोर in his भाव. He was completely drenching with his mood after meeting him. What is the proof? Bhagavatam में है. When he was going, who met him? Vidura. हाँ, of course. मैत्री मुनि met him. मैत्री मुनि से उनकी बातचीत हुई. But विदुरा जी जब उनको इंसल्ट करके निकाला गया, after he was insulted and he said, I'm going. He first met उद्धव मुनि. और उन्होंने उद्धव से कहा, भैया आप मिल के आ रहे हैं, you have just met him and he is left. Can you tell me about what he said in the end? He was so much drenched he could not speak. He said, ऐसा है, मैत्री मुनि भी थे, उनसे बात कर लेना, मेरे बस का नहीं है इस वक्त बताना मुझे. There are certain characteristics of those who have had darshan of Krishna. One of them is Pishachvat. That person will look like an idiot to a normal mass. Because they don't, number one, they can't control their mood. Second is they don't want any disturbance. So they'll behave like a madman. That's one of the, like the Romanch is there, the Ashru is there, and others. One is Pishachvat, like a Pishach he will be. That is what comes in Bhagavatam for Yudhishthir Maharaj. After he heard that Krishna has left, he immediately became Pishachvat. पूरा सब कपड़े वपड़े सब. Anyway, तो कृष्णा ने उद्धव को क्या बताया अपने बायोडेटा के बारे में? He told a lot of things right there. But what did he tell here? He said, repeat करिए, अहम आत्मा उद्धव अमीशाम भूतानाम सुहृदीश्वरः अहम सर्वाणि भूतानि तेषां स्थिति उद्भव अव्ययः. उन्होंने अपना बायोडेटा में एक और ऐड किया. क्या? अहम आत्मा उद्धव. आई एम द सुपर सोल इन एवरीबॉडी. अंदर यहाँ पे 2 people are sitting. एक सुपर सोल, एक सोल. Actually, sometimes I mean, it looks like we may not be able to see Krishna because he is very close. So I can see mobile now, but can I see mobile now? I cannot see. That is another problem because he is so close. वो दिखाई नहीं दे रहा किधर है. हम सोच रहे नहीं दिख रहे. So he is saying, I am the super soul of every living entity. चिड़िया हो चाहे कोई भी हो, उसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं. जैसे बच्चा को अगर गुस्सा होकर निकल जाता है अपने घर से तो बाप बोलता है मैं तेरे साथ चलता हूँ यार, एक दिन तुझे बुद्धि आएगी मैं ले आऊंगा. ऐसे ही जब हमारा मूड हुआ नहीं हमको साथ में नहीं रहना, हम खुद ऐश करेंगे, बाहर आ गए हम वहां से, भगवान ने कहा क्या करें, तू जा रहा है बेटा कोई बात नहीं, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ, जब तेरी इच्छा होगी तो तेरे को वापस ले आऊंगा मैं. इसलिए अंदर की जो बात से आवाज से आती है वो ब्रेन की आवाज से वो बेटर होती है. इसलिए सब कहते हैं लिसन फ्रॉम हार्ट. क्यों भाई? बिकॉज ईश्वर सर भूतानम हृदय से अर्जुन तिष्ठति. ही इज सिटिंग इनसाइड द हार्ट. सो लिसन टू द हार्ट. Anyway, so he said, I am the super soul. Suhrit. Suhrit is Sarvabhutanam. He is the Suhrit. And Ishvara, I am the supreme controller. काफी चीजें मैच कर रही हैं पहले वाले से, but he said, this is what I am. Then he is saying, Aham Sarvani Bhutani. I am for, okay. And then he said, Tesham Sthiti of this. I am, see this. Aham Sarvani Bhutani. I am only actually living entities. But qualitatively,
बट क्वांटिटेटिवली हमको छोटा है, हमारे पास रेज टू द पावर 2 है, उनके पास रेज टू द पावर इंफिनिटी है, बस इतना ही फर्क है, बट रेज टू द पावर का बेस सेम है. इवन फिजिक्स सेज दैट, राइट? मैं तो खाली 10वीं तक ही पढ़ी है फिजिक्स, बट फिजिक्स में है, राइट, दैट it's only a number which is changing the substance into something else, otherwise the electron proton is the same, correct? उसका नंबर चेंज हुआ तो गोल्ड बन गया, नंबर चेंज हुआ तो वो सिमिलरली इधर है. तो इस सेइंग कि मैं ही सब लिविंग एंटिटीज बना हुआ हूं, पर छोटे छोटे अंश में बना हुआ हूं, ममेवांशु, एंड आई एम द वन हु इज मेंटेनिंग एंड एनिलेटिंग. तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन उद्धव को भी दिया. अच्छा, अब ये कह सकते हैं कि जो सुपर सोल है, भगवान ने बोला और कहाँ कहाँ है, इसका एक और प्रूफ है भागवतम में 1:2:11 में. क्या बज गया? ओके, वी हैव 7 more minutes. व्हाट इज इट? वदंती तत्तत्विदस. वदंती तत्, जानने वाले लोग क्या बताते हैं? तत्वविदस क्या बताते हैं? तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम, वो जो सब्सटेंस है वो नॉन ड्यूअल है, और वो कैसे मैनिफेस्ट होता है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते. एक तो ब्रह्मेति है, आई एम इनसाइड आउट, इनसाइड, दैट इज ब्रह्मेति. परमात्मेति, आई एम द सुपर सोल, आई एम द आत्मा, एंड धन भगवानिति, personality of Godhead. So this is confirmed here also. So this is the biodata of, okay, let me see here. Okay, among subtle things I am spirit soul, and things that are difficult to conquer I am the mind. लोग कहते हैं यार मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं आता, भाई कैसे आएगा? राम सुखदास जी का वो कहते थे, जी हमारे बच्चे सुनते नहीं है, क्या करें? उन्होंने कहा नहीं सुनते हैं तब तो इतना फंसे हुए हो, सुनते तो कितना फंसते हैं. My children don't listen to me. When this question was, what should I do? This question was put to a very senior saint from Gita Press. He said they are not listening. Even after that, you are so much attached. If they were listening to you, what would happen to you? So anyway, then again he repeats here, aham gatirmitam kala. I am the ultimate goal. Kala kalayatamaham. I am the time. So basically, he's giving he's telling all his biodata. I will close, and then we have the kirtan, and then what is he? See, he is not just on his own as one person. See, Brahma Rishinam Bhrigu Aham. Among the rishis, I am Bhrigu Rishi. उसके लिए तो भगवत गीता में जो चैप्टर है, I have taken just few ones only. This is in Bhagavatam. He is telling Raja Rishi Namaham Manu. Among the Rajas, at that time they were used to be Raja Rishis, right? Saintly kings, not like today's politicians. There was one news, right, where Lee Kuan Yew said that half of the parliamentarians have some kind of criminal case in the court. More than half. So they were feeling very bad. भाई खराब क्यों लग रहा, सच ही तो बोल रहा हो. अब उस वक्त का राजर्षि थे, नॉट सिंपल राजा. ऋषि पहले साथ में थे वो लोग. देवत. सो यहाँ पे देखिए 3 तरह के ऋषि बताए गए. पहले ब्रह्म ऋषि, उसमें भृगु. दूसरे राजर्षि, उसमें मनु. तीसरा है देवर्षि, अपने हम लोगों के फेवरेट देवर्षि नाम नारद अहम अविर्धानी अस्मि धेनुषु. और काउज में मैं कामधेनु. उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया. कितना है तो ओके, आई थिंक इसमें खत्म करते हैं यहाँ पे. तो अभी दिस इज कृष्णा. तो सवाल ये होता है भाई, इनसाइड भी आप हो, आउटसाइड भी आप हो, पहले भी आप थे, बाहर भी आप थे, सब कुछ आप ही आप हो, तो मैं कौन हूं? मेरा क्या मतलब मेरा तो कुछ वजूद ही नहीं रहा. आई हैव गॉट नथिंग टू डू. व्हाट डज इट मीन? सो देयरफॉर ही सेड ममेवांशु जीवलोके जीवभूत सनातन. He said I am the living entities but very minute. So therefore we are also okay. It is said that we are separate, but it is not this separate, that this is separate from here. It is still connected like sun and sunshine. Sun and sunshine are one, but sunshine is not sun.
and sun is not sunshine. So like that, this is, so the moment this ansh is connected with the whole, then the job is done. That is what the purpose of our existence is. Okay. So similarly, when he said that value tabhi hai when I am connected, otherwise no value. So similarly, he said, so if my existence is connected, then I have got some value. This is a very good thing to be bragged about, that I am servant of Lord Ram, Lord Krishna. वो imagine the person who is reporting to Sheikh Mohammed, क्या power है उसमें? I mean, first that person appointment you cannot get. Forget Sheikh Mohammed. Can you get? If you go to his minister and say, "Sir, I need a job," hey, कौन है भाई? Similarly, so what happened एक बार? I think we have shared this before. But I will close with this, and then next one we will see what is the contradiction. If he is such a great personality, but how does he behave? बहुत बड़ा contradiction है. So once what happened, द्वारका में कृष्ण जी बैठे हुए थे. In Dwarka he was sitting. I would have shared this before. I heard it from my Guru Maharaj, Mahavishnu Goswami Maharaj. So there was a long queue मांगने वालों की. तो पहला उधर नारद जी was also there. So first one came, Haribol, what's his name? Ayan. Haribol. So there was a long queue. तो पहला वाला आया, तो उनके मिनिस्टर्स ने पूछा, कृष्ण जी was sitting there, क्या चाहिए आपको? बोले जी लड़की की शादी करनी है, I don't have money and I need some financials and this thing. He said, okay, 1,000 gold asharfis, give it to him. चलो भाई, he went. Second one came. He said, sir, what do you? Sir, I am a farmer from many generations, but I have lost my land. जमीन चली गई, थोड़ा जमीन चाहिए. Oh, थोड़ा क्या? 100 acres. Next. तीसरा गाया, बोले तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज कुछ नहीं, सिर्फ भक्ति मांगने आया हूँ. अब वो फॉर्म में आ रही है धीरे धीरे. So बोला कि तुमको क्या चाहिए? बोले जी हम तो आपकी सिर्फ भक्ति लेने आए, come for devotional service. He said, you do one thing, you go in the waiting room. नारद जी was astonished, यार ये क्या क्या चीजें तो ऐसे हाथों हाथ ही is giving, भक्ति मांगने आ बेचारे को अंदर वेटिंग रूम में, उधर एसी भी नहीं है, जाके वेट करो भाई. What is the point in that? Next one came, sir what do you want? Sir मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, बट कुछ व्हीकल्स नहीं. बोला ओके 1000 एलिफेंट्स लेके जाओ, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करो तुम. After 2-3 one more person came, तुम्हें क्या चाहिए? सर आपका सिर्फ डिवोशनल सर्विस चाहिए, तुम वेटिंग रूम में जाओ. शाम हो गई, सबको सब कुछ मिल गया. कोई 3-4 लोग थे, 3-4 people only remaining who were in the waiting room. So in the end Narad ji said, boss समझ में नहीं आया, you given all your Lakshmi, everything you are giving, but वो बेचारा खाली डिवोशनल सर्विस ही तो मांग रहा था. Only that he was asking, poor fellow. That you are waiting since morning till evening, they have not had prasadam, nothing they are waiting. He said, बताओ बेचारा नहीं है वो, एक बार डिवोशनल सर्विस दे दिया तो मुझे उसका नौकर बनना पड़ेगा. प्रॉब्लम ये है, I have to become his servant. Once I give devotional service, I should find out about that fellow first. That's why I put him in waiting room. I want to. हाँ उनका बायोडाटा चाहिए. उसके बाद देखेंगे. So like this he is there. See, I'll tell you. Every day, so many people are coming to us in office, home, everybody. क्या चाहिए आपको? ये चाहिए, दिया, transaction finished. If somebody comes to you or somebody gives you a call, he said, sir, क्या बोलिए क्या काम है? नहीं सिर्फ I have called to seek your welfare. How you will feel? You will feel, यार, let me do whatever I can for this person, because he doesn't want anything from me. This is how he also does. यार इसको कुछ नहीं चाहिए, मतलब इसको तो सब कुछ देना पड़ेगा. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. This is Krishna. He has 6 opulences: unlimited wealth, unlimited fame, unlimited strength, unlimited beauty, unlimited knowledge, and unlimited renunciation. See the contradiction. Sundar Prabhu was asking, कैसे याद करें इसको? पहले 5 को कैसे याद करना है? Whatever I want. No, whatever I want. For myself. Okay, I want very, I mean unlimited तो पता नहीं, अच्छा पैसा चाहिए, कम से कम दुबई में एक विला तो होना चाहिए.
फेम किसको नहीं चाहिए? Goswami Tulsidas ji has written, fame is like such a beautiful woman who has got bad odor. That is fame. Meaning, if you are behind fame, you will be like a super beautiful woman, but it has a odor problem. Nobody will come near that. Nobody spiritually will come near because the odor is bad. ये है फेम. स्ट्रेंथ किसको नहीं चाहिए? स्ट्रेंथ. ये बात अलग है कि चाह के भी नहीं मिल रहा, बट ब्यूटी, नॉलेज, he has unlimited knowledge. That's why, what is that? Sat Chit Anand. Sat, eternal, Chit, full of knowledge. That one. But if somebody has these 5 things, he can be unlimited renunciation. अगर मेरे पास 5 चीज है तो बाढ़ में क्या renunciation? एक चीज रहने में बाढ़ में गया. This is the beauty of Krishna. सब कुछ है पर कुछ नहीं चाहिए. जो आया लेके जा भाई. That is the contradiction we will discuss next time. I was thinking maybe we'll do the full thing today, but Krishna's arrangement. So we'll end at this. Mataji, you do Kirtan. Then we will have the best part, which is Jai. Shri Shri Granth Raj ki. Jai.